आई हैव अ सीक्रेट फॉर यू। अगर मैं कहूँ आपके गट के अंदर एक पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड है which is influencing your health, your happiness, your age and supports you in disease reversal, क्या आप उसके बारे में जानना चाहोगे? Then keep watching. Hello, I'm Dr. Harshita Jain, a functional medicine physician and therapist trained in reversing diseases by getting to the root cause of it. Today in this video we will decode all about gut microbiome, which is where the seat of all diseases and health lie. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये गट माइक्रोबायोम होता क्या है? दीज आर ट्रिलियंस ऑफ कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस इन योर इंटेस्टाइन। मुझे कमेंट्स में बताइए ट्रिलियंस में कितने जीरो होते हैं? आपके बैंक अकाउंट में ट्रिलियन भले ही थोड़ा टाइम लगे, बट आपके गट में फ्रॉम बर्थ देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कीटाणु एंड बैक्टीरिया। बट इसे आपको क्या फायदा? दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग योर फूड, मेकिंग वाइटामिन, इन्फ्लुएंसेस योर मूड, योर हैप्पीनेस, गिव्स यू इम्यूनिटी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर योर health and diseases. When there is an imbalance in gut microbiome, it leads to lots of diseases. First, your immunity gets affected because 70% of immunity हमारे gut में है. Then autoimmune conditions की tendency ज़्यादा हो जाती है. Second, your gut microbiome influences your mental health, your mood, how are you feeling? Because more than 80 to 90% of serotonin, the happy hormone, आपके gut में secrete होता है. Third, your weight, your metabolism, cravings, all of this is influenced by the gut microbiome. Fourth, अगर आपको स्किन इश्यूज है, रैशेस, एक्जिमा, सोरियासिस एंड दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, वापस आते जा रहा है, then you need to look into your gut microbiome. And finally, this gut microbiome is responsible for reversing diseases like PCOD, autoimmune conditions, skin issues and many more. ठीक है, हमने gut microbiome तो समझ लिया, अभी एक्चुअली एक्शंस पे आते हैं कि क्या चीजें करने से gut microbiome बेटर होता है और क्या चीजें स्टॉप करने से gut microbiome और भी बेटर होता है. So let's first understand how are you messing up your gut microbiome. First, over usage of antibiotics. Antibiotic होती क्या है? It is anti against biotic. Biotic मतलब कुछ भी जो living है. हमारे अंदर जो पेट के अंदर कीटाणु है, ये सब कुछ living है. So antibiotic ना सिर्फ बुरे कीटाणु को मारती है, बट साथ ही साथ अच्छे कीटाणु को भी मार देती है. So अगर आप overly antibiotic use कर रहे हो, then आपका gut microbiome थोड़े खतरे में है. Second, junk food and sugar. For all the bad gut bacteria, sugar and junk food is what they thrive on, and this reduces your good bacteria. So if you're excessively eating sugar, indulging in sugary foods and eating lot of junk food, then also your gut microbiome is going for a toss. Third, poor sleep. अगर आप restfully sleep नहीं कर पा रहे हो, where you are waking up in between, you're having nightmares, you're getting disturbed sleep, you're not waking up fresh, then also your gut microbiome is going for a toss, because gut के अंदर there is its own circadian cycle and rhythm. So if you're waking up beyond the hours, your gut is also overworking, and that's when it goes for a toss. And finally, the fourth one is stress. If you're too stressed, then also the gut microbiome cannot survive the stress for a long term. So ये तो हो गया कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है. Now let's come to क्या करना है which can fix your gut microbiome. First, eat the rainbow. मतलब add diversity to your meals. Add more colors. जैसे हमें स्काई में रेनबो कितना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कलर्स, we already light up. That is when जब प्लेट में भी वो सब कुछ होता है, हमारे सेंसेस को भी अच्छा लगता है, and our gut microbiome, the कीटाणुs are all happy of eating all of those colorful plants, fruits, vegetables. So add more colors, add the rainbow into your meal. Second, eat fermented food. Fermented food naturally have more and more good gut bacteria. So eat fermented food like kombucha, kimchi, sauerkraut, pickles. Eat fermented foods. Third, eat prebiotics or fiber-rich food. Gut microbiome, because they're living, उनको भी खाना चाहिए to survive, and उनका खाना क्या है? Fiber rich food. So add lots of fruits, whole plants, vegetables, whole grains to your diet because they are rich in fiber, and your gut bacteria will thank you for it. Fourth is movement. Move more. Walk, stand, go for exercises, take the fresh breath of air. The more you move, the exercise you give, your gut bacteria will also enjoy this. Even after doing all of this, if you're still suffering with constant bloating, irregular bowel movements, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा acidity, burping हो रही है, skin issues is coming back again and again, or you have any kind of chronic autoimmune diseases, then please go and consult functional medicine physician who can prescribe you gut microbiome test after knowing your detailed history and what your lifestyle is, so that they can create a personalized plan for you so you can overcome all of these symptoms and diseases. If you found value in this video, share it with people who have gut issues. Hit the bell icon and follow for more videos. Thank you. Signing off, Dr. Harshita Jain.